आमंत्रण मिला मुख्य अतिथि के रूप में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गदगद हो गया। आज के इस पावन दिन पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमें नहीं भूलना चाहिए जिनके कारण या जिनके योगदान से आज हम यहाँ पर खड़े हैं और इस खुली हवा में, इस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। लता जी ने बहुत अच्छा गीत गाया है। हर साल हर बार उन गीत को सुनते हैं, कुछ याद उन्हें भी कर लो। हमें उन जवानों को भी नहीं भूलना चाहिए आज के दिन, जिन जवानों ने सीमा पर रहकर हम सबकी हिफाजत किए, हमें स्वतंत्र रूप से रहना जीना सिखाया है। और जिस कार्य के कारण आज मुझे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, मैं उस कार्य से भी आप लोगों को दो चार करना चाहता हूँ, दो टूक उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। मैडम ने बहुत छोटे से क्षण में बहुत बड़ी बातें कही थी। एक्चुअली जो हमारा यूनिट है, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कहलाता है, वो भारत के सभी ज़िलों में ये यूनिट काम करता है। और हम लोग उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो हमेशा से उपेक्षित रहा है। अगर आप भी अपने अंदर के बालक को झांकोगे, अपने बालक को देखोगे, अपने आप को स्वयं बालक के रूप में पाओगे, तो आप भी कहीं ना कहीं देखोगे कि नहीं, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है। क्योंकि हम बड़े लोग हैं ना, पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, घर के अंदर बच्चों के साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, मेरे बच्चों के साथ भी इस तरह होता है, सभी के बच्चों के साथ, और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। वो बच्चा हमेशा उपेक्षा का पात्र रहा है। तो ठीक है, हम खुशनसीब हैं कि हमारे माता पिता हैं, मगर 2 मिनट के लिए आप सभी सोचो, इस पावन पर्व पर इस बात को नहीं करना चाहिए, किंतु बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरे माता पिता ना होते या आप सबके माता पिता ना होते, माफ़ करना किसी के ना भी होंगे, तो हमारी परिस्थिति क्या होती, हम कहाँ खड़े होते? कभी सोचा है हमारा अस्तित्व क्या होता? कई सारे सवाल मन में कि भाई माता पिता नहीं होने के पर क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, किसी तरह से समाज के साथ जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। उन बच्चों को एक नई दिशा दिखाकर हम लोग उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। सरकार की अलग अलग जो योजनाएं हैं, अब चलते चलते मैं एक योजना की बात भी कर दूं, क्योंकि आप लोगों के आसपास शायद स्कूल में भी ऐसे बच्चे होंगे जो अनाथ ऑर्फन होंगे, जिनके माता पिता नहीं हैं। उनको सरकार हर महीने 3,000 रुपये देती है उनकी स्टडी के लिए, अभ्यास के लिए। तो इस तरह की विविध योजनाओं के सहायता करके, इस योजनाओं का लाभ दिलाकर बच्चों को हम सहायरूप बनते हैं। और साथ ही साथ एक चलते चलते एक बात और बोलते चला जाऊँगा, क्योंकि समय भी बहुत कम है और कोविड-19 के बारे में डिस्कस करना मुझे आज उचित नहीं लग रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, सबके फ़ोन में रोज़ न रोज़ कोविड-19 के बारे में कुछ न कुछ आता ही होगा। अब मैं आपको उसके बारे में समझाऊँ तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा कि उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, इतना है कि अपने बच्चों को संभालना आपको, क्योंकि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन से बिलोंग करता हूँ और वहाँ का लीगल डिपार्टमेंट भी मैं ही देखता हूँ। उसके लिए बच्चों को खास संभालना है। और एक खाली इतना बोलते बोलते चलूँगा कि अगर आपको कोई बच्चा किसी तकलीफ में दिखे, प्रतिकूल परिस्थिति समझ सकते हो, जो एक सहज परिस्थिति नहीं होती, कोई बच्चा अपने घर परिवार से छूट गया हो, मिसिंग हो गया हो, आपके आस पड़ोस में कहीं ऐसी घटना बनती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग पुलिस के पास जाने में कतराते हैं, घबराते हैं। मैं आप लोगों को चलते चलते कसरत भी कराते जाता हूँ
और आप लोगों को ध्यान में भी रहेगा करना क्या है, क्योंकि बार बार ये नंबर आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। ये नंबर ऐसा नंबर है जो बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। और कोई भी बच्चा किसी परिस्थिति में आपको दिखता है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके उस बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको अपने घर तक पहुंचाने की मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं वो मेरे साथ एक कसरत कर लें। खाली नंबर है 1098, मगर मैं हमेशा ये कसरत सभी से कराता हूँ जिससे सबको रिमाइंड हो जाए। थोड़ी कसरत हो जाएगी और कुछ नहीं। 10 हुआ? एक अंगूठा अंदर कर लोगे तो 9 हो जाएंगे। 9 हुआ 9? अब एक प्यारा सा मोर ऐसा बना दीजिए तो 8 हो जाएगा। 5 + 3 हो गया। अब मेरे साथ आप सभी दोहराओ। 10 9 8। ये नंबर याद रहेगा आपको? बहुत सिंपल नंबर है। कभी भी कोई बच्चा आपको किसी परिस्थिति में तकलीफ में दिखाई दे, इस नंबर पर आप फ़ोन करके उस बच्चे की सहायता कर सकते हैं और एक समाज के अंदर एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ फादर का, मैडम का, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आज के दिन को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बच्चों को ऐसे तो मेला वेला कुछ है नहीं, लेकिन अपने बच्चों को आगे भी ध्यान रखना है और अच्छे से अपना करना है। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for your really meaningful and valuable message. May I request you to please remain on the stage so that we could have the honor of felicitating you. May I request our Honorable Principal, Reverend Father Maria Polraj, to please felicitate the respected chief guest, and I request Jaspal teacher to please facilitate for the same. Thank you, sir. Thank you, Father. You can please be comfortable. आज़ादी का उत्सव हो, गर्व भरी सलामी हो, देशभक्ति का जज्बा हो, तो जुबान कैसे चुप रहेगी? The celebration would be in full swing when a sweet voice comes in tune to patriotism, presenting Ms. Diksha Padwal with a beautiful song. जब तक थी सांस लड़े
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Next, respected sister, my dear colleagues, dear students, a very happy Independence Day to all of you. It's a new normal. Maybe in your lifetime, this is the first time that we are all celebrating an Independence Day as if we are in a closed compound jails. When I look at you from here, for me it looks totally a different picture altogether. So it's a new normal. We are being forced to learn to live this life. This is 74th Independence Day of our country. 73 years we have lived freely, happily and joyfully. It's all gifts from our freedom fighters, the great leaders of our country who sacrificed their lives. If only we remember them and honor them, definitely our lives will be blessed and our children will be blessed and our country will be blessed. So it's each one's responsibility and duty to remember them and also impart this legacy to the children. The children should know the value of freedom. As Sir rightly said, even in our families, our children may be struggling. Even in our own families, we must be torturing our children, which we are not aware, which we may not be aware, which we don't want to be aware. As he rightly said, because we are big, I am the boss. Are we giving the freedom to the children that they require, that they need? Or I am giving my way of freedom to my children? That's a question mark. That's a question you and me need to ask. I have come through many children who are suffering for no fault of theirs. The children are suffering for no fault of theirs.
father must be drinking every day, the wife must be fighting with the husband every day, and the child is growing in that atmosphere. The mindset of the child is being framed in that atmosphere. Such a child will turn out to be a disturbed child. So it's not the fault of the child. It is the elders and the society and the atmosphere that we create is very, very, very important. Which requires sacrifice like our great leaders, Mahatma Gandhi, and so many others who have sacrificed so that the people of this country may have a freedom, may enjoy their life to the full. So today, on this day, as Sir rightly expressed, that let us give that freedom to our children in our own families, and the same freedom when they come to us in the school as well. I know it's very difficult. It's damn difficult. It's extremely difficult. But it's a challenge. It's a challenge. That's the reason the legal laws are being framed so that children get freedom. Only the free mind can reach the peak. If your mind is not free, you cannot reach the excellence. Some part of our life will be disturbed because we are not free. So on this special day, and a spacious day for all of us, as we enjoy this freedom, let's also remember that we need to safeguard this freedom. We need to preserve this freedom. We need to impart this freedom to the generation that is coming. We lived in a free life, in a free moment, in a free situation. We need to provide the same situation to our children as well, because they are the future. If we contaminate this particular social situation, the children will grow into it, and the future also going to be a tough and a difficult one. So we are responsible for the present situation, and we should be responsible for the future situation as well. So having said this, I would like to once again wish you all a happy Independence Day, celebrate it in a meaningful way. And so I would like to thank our chief guest. I think most of you may know him, right? He is our own parent. The children are studying in our school. And he had met me almost a year ago. And he told me, sir, Father, anything you want to organize for children, he will be ready to cooperate with us. Sir, I want to tell you, we had this training almost 6 years ago for child protection. And we had called the resource persons, and the teachers are well informed. And every teacher is given guidelines how they need to treat the children. So I'm sure our teachers are well informed how to take care of the children. So as he has come here, so I would like to tell you, please be in touch with him for any legal help, for any children who are orphan, who are having problem with parents. It is not to complain, but it is to help. It is to help them. Sometimes some parents may be very difficult, the disturbed families. Child also gets disturbed. So such children, if you like to get some guidelines or help, I think sir will be surely, yes, he's always ready, so please be in touch with him. Okay? So, thank you for, I think, coming on time, 8:30. I had given 8:30, thinking that it might rain.
So let's thank the Lord that we have a bright day today, a pleasant day today. So let's hope that the coming days also will have a bright and pleasant day. However, we need more rain. We have not received sufficient rain. So we also pray that God continues to give us rain, so we may have a very pleasant life during this year. Okay, having said this, a few announcements so that afterwards we can quietly move away. Thank you for following the social distancing. I'm very happy that I need not have remind you. So thank you for that. And please be in touch with your children through social media, WhatsApp. There are still some parents who are coming and telling they don't know what is happening in the school. Yesterday, last week, 1 or 2 parents came and said they didn't know that there was an exam. So the teachers, please take an extra step, extra effort. I know it's difficult, but that is how you sacrifice your life. That's how you sacrifice for the good of the children. Take an extra effort, find out and see that the children are, continuing. And there are so many things being sent by WhatsApp these days. I'm also forwarding to you. So my humble request, don't take it for granted. Each circular, please read full till the end. If you don't understand, please ask someone who understands. Okay, and try to participate to the best. Don't neglect, it's not, dusre teachers karenge, I shall not do it. Please try. Okay, so please do your best and definitely God will bless all of you. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind.